So welcome to Adda 24/7 OPSC. I'm SK Rout here. Today's session, YouTube session, is very important, unique session to remember. It basically will focus on how to remember list of the Constitution. बहुत सारा पिलांगर डिमांड था कि केमती लिस्ट रा मन रखिबा एमती तो मने रखिबा जो कथाटा उठे सेटा एक्चुअली ह्यूमन मेमोरी डज नॉट हैव एनी मेमोरी चिप्स. We remember things because we understand them. We remember things because we are at home with the subject. Getting it or not? We understand something, then we remember. If we do not remember, then that means we have not understood it properly. So it is the first logic mu kahibi ki मने रखिबा केमती कथाटा उठिले सेटा व्यक्तिर बुझिबा उपर निर्भर करे. तो आमे जदि तार लॉजिक गुरा बुझिबा से लिस्ट हो, शेड्यूल्स हो, पार्ट्स हो, आर्टिकल्स हो, we will have a command over them. Very simple. जदि गोटे जिनस लगाव रहे बा गोटे किछि आमे ता उपरे चिंता करू बा ता उपरे भाबू कि ता उपरे आमे एनालिसिस करू तो ऑब्वियसली यू विल रिमेंबर. Take example of a simple example I can give you. Suppose Lord Jagannath temple is located in Puri. It is also located in other places, at other places of Odisha. There are a lot of Jagannath temples. But most of us remember about Lord Jagannath temple at Puri because it's not that it is the largest temple or anything like that. It is because we visit the place more often than we visit to other places. We visit the nook and corner of the temple, we behold the god and we see the surrounding gods and the temple. So we remember mostly about it than other temples. We might have visited other Jagannath temples, but we remember more about Puri Jagannath temples. Why? Because we are more concerned about it. We learn, we get more report, we get more videos on it, we hear more things about it. So it has become a center of attraction for us. In this way, if you devote your cool time, the time when you are very comfortable, if you devote that time on your study, you will remember everything. शान से पढ़ो बा गोटे जो कथा रे अछि कि मन मुन चैतन्य देगी पढ़ो त माने कोन कॉन्शियस सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस स्टेट्स सबुथिरे जदि हमर गोटे चेतना रहिला तला हम सब जिंस कैप्चर करि परिबा. सब जिंस गोटे हला सैक्रिफाइस, गोटे हला मेन हला कोन मेन हला तुमरो गोटे डेडिकेशन, गोटे मोटिव रहया दरकार. ठीक है प्लान. सो लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी मन रहिबो, बट फिर भी we will discuss some simple ways so that we can guess something about it. Let us go to that. List in the Constitution of India, how to remember 7th schedule Indian Constitution. Okay, we'll discuss the topic. इंट्रोडक्शन में क्या कहेंगे हम? इंट्रोडक्शन में ही कहेंगे कि लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द 7th शेड्यूल इज ए यूनिक पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री, ए कंट्री with quasi-federal nature. It is very essential. 7th schedule has much more importance. Without 7th schedule, the constitutional framework, but the constitutional mandate is impossible. संविधान रे जो मैंडेट अच्छी बा जो निर्देश अच्छी कि भारत रे गोटे
क्वासी फेडरल सेटअप रहिबो बा जो यूनियन ऑफ स्टेट रहिबो सेंटर स्टेट रिलेशन रहिबो एवं भारत रे यूनिटी और इंटीग्रिटी बजाय रहिबो सेई टाइप रो व्यवस्था कराई छै. Don't think that the unity and integrity of the country is there and there is no contribution of the constitution. Constitution has large contribution towards unity and integrity. संविधान एमती तैयारी होइछि, संविधान एमिति भाबरे गढ़ा होइछि जेमति देशर अखंडता, देशर एकता, संहति ये बजाय रहउछि. तो सेटा सेटिफाई 7th शेड्यूल इज वेरी इंपोर्टेंट. 7th शेड्यूल गोटे छोटो जिनस नो. 7th शेड्यूल रे लॉट ऑफ थिंग्स. सो लेट अस बिफोर नोइंग गोइंग टू नो हाउ टू रिमेंबर द थिंग्स, let us know what are its importance. Let us know its importance of the importance of 7th schedule. Let us understand it clearly. What are the importance of 7th schedule? Why 7th schedule is important? Let us understand it. Why 7th schedule is important for us? First of all, 7th schedule is important because I will just swim over that concept. This is a very deep concept. It's not appropriate time to discuss in detail. We'll just fly over them. ताकु टिके खाली झलक नहीं जीवा गोटे ग्लिम्स ऑफ ओवर द मेजर इंपोर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ योर 7th शेड्यूल. इट सिक्योर्स मैंडेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. संविधान रो निर्देशनामा, संविधान रो जो मैंडेट माने कोन, संविधान रो जो लक्ष्य, मूल लक्ष्यटा सेटा 7th शेड्यूल रे स्थापन होउछ. 7th शेड्यूल contains division of power and the division has been made in such a way that there have been least controversies regarding that distribution. Although there is a demand for more state autonomy and there is reform, there is a demand for amendments in the division of power, but major commissions including RS Sarkaria commissions has made it clear that there is no need for amendment in the existing distribution pattern of powers between the center and states. RS Sarkaria commission तांको निजर रिपोर्ट रे कहितले कि जहा अरेंजमेंट हेछि, जेमती डिवीजन हेछि, से डिवीजन रे कोनोसी विशेष परिवर्तन आनिबा आवश्यक नहीं बोली RS सरकारिया कमिशन 1983 रु 88 मसिया जो कमिशन बसितला से रेकमेंड करथिले. ताले कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट सिक्योर करछ. अर्थ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन that is fulfilled. Then division of powers. It contains division of powers between the center and states under the 3 lists that is there. Next is your, just will fly over that. Harmony between the union and the states. Harmony between the union and states. 7th schedule establishes Pragya. Good evening Pragya. Thank you for being here. ठीक है जी. तो it establishes harmony between the center and states. चिंता करो जदि 7th schedule नथांता, पावर्स किसी गोटे लीगल मैंडेट अंडर दिया होता ताले कली होता, कॉन्फ्लिक्ट होता. एते कथा थाई कि तो कॉन्फ्लिक्ट हो, सेंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट बहुत रही. सेटिपई 7th शेड्यूल establishes harmony between the center and states. Without 7th schedule it is impossible. Yes, Nihar, thank you very much for your kind words. I'm very much really excited. You people are inspiring me to bring more and more such videos. Really, it is highly praiseworthy. कि तुम्हारा ये word गुरा
मते बहुत इंस्पायर करूची कि मु आउरी एमती भल भल यूजफुल वीडियो आने जोटा बहुत रेयरली अवेलेबल होची समस्त भिन्न भिन्न ऊपर वीडियो करछंती मजा मस्ती चली किंतु प्रकृत जो असली पाठ गुरा कम वीडियो रे अछि तेनो सेटा हम पिला माने पांतु सो यू पीपल आर इंस्पायरिंग यू पीपल आर माने यू आर माने ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी थैंक यू सो दैट इज बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट इट एस्टैब्लिशेस हार्मोनी बिटवीन द सेंट्रल स्टेट्स बिकॉज देयर इज ए डिवीजन ऑफ पावर जदि तोर मो भितरे डिवीजन हे गला तू कोन करिवु मु कोन करिवि दी जण मिसी कोन करिबा क्लियर हो गला ताले हमें कॉन्फ्लिक्ट हेबनी तो साधारण कथा एटा जंती पारिवारिक जीवन रे जहा सोशल लाइफ रे जहा नेशनल लाइफ रे भी से गोटे एंगल रे बुझ कि डिवीजन जो हुए केमती हुए धरा जो हमें बापार तीनटा पुओ तो हम बापा कोन करछंती हमको आम भितर प्रॉपर्टी एमिति शेयर करछंती जंती से गला परे आउ किछि कॉन्फ्लिक्ट न हो चेष्टा करा जाए एंड एठी जो फादर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस द मेकर्स they have made distribution or division in such a manner that it is giving least chances for conflicts मु मना करूनी conflict होउनी बेली conflict तो होउची मनुष्यर लोभ आशा माने निजर इच्छा सब बेले परिवर्तनशील तेणु बापा बांटी दे गला पर जे तीन पुओ कली करिवुनी आमे सेमती किछि माने नाही फिर भी गोटे जेन्युइन लेवल रे देखिया गले बापा जमती ठीक भाव में बांटी की जाती सबू पुओ को न्याय दियंती सेमती मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जमती बांटी चंती सेंटर और स्टेट भितर किछटा ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन को देखी बांटी चंती जमती धर बड़ पुओ को गोटे किछि पूर्व पट देई चंती सो दैट बड़ पुओ सेठी किछि गोटे काम करिवो सेमती सेंटर को किछि गोटे पावर देई चंती जोटा स्टेट कहूची कि मते देई थांते ताकू कहि देले किंतु मेकर्स माने सेंटर को एइति पे देई चंती सो दैट इट ऑल इंडिया रे कंट्रोल हबो तो हार्मोनियस फॉर एग्जांपल देख गोटे एग्जांपल डिफेंस कहले सबु आछि आर्मेड फोर्सेस पैरामिलिटरी फोर्सेस अदर अलाइड फोर्सेस जो रहउचंती सेटा सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर रे रहउची चिंता कर जदि डिफेंस को कॉन्करेंट रे रखाई थांदा जदि डिफेंस को कॉन्करेंट रे रखाई थांदा ताले इंडिया जो तुम्हें जो भारत वर्ष रे आज जन्म नैछ बा आज जो क्रेडिट नौच कि मोटे विशाल भारत वर्षर गोटे नागरिक आई एम वन एमंग द 140 crore और मोर देन दैट पीपल ऑफ इंडिया वर्ल्ड आज गोटे एनविएबल आखिरे देखुची हमको कि एते बड़ डेमोक्रेसी केमती जीवित अछि एते बड़ गणतंत्र केमती सजीवित अछि केमती फ्लोर्सफुल होछि 98 crore voters, more than the population of the European countries. Entire world आश्चर्य होची कि एते बड़ देश एते डेवलप्ड नो इकोनॉमी एते डेवलप्ड नो तथापि एठी गणतंत्र केमती सजीवित होची केमती सशक्तिकरण होई पारुची एवं गणतंत्र केमती आजी ऊर्ध्वमुखी हेची दिस इज इंडिया तो आज जो देश रे तुम अच्छ सेटा जदि डिफेंस को कॉन्करेंट रे दिया थांता ताले द कंट्री वुड हैव बीन डिवाइडेड इनटू पीसेस आज हमें हमर परिचय खोजु थांते छोट राज्य रे रही छोट देश रे रही थांते परिचय खोजतांते कोन करिवु कोन न करिवु चिंता कर आज भारत वर्ष रे जन्म होई हमर स्वप्न केते विशाल होई पारुछि वी कैन ड्रीम एनीथिंग्स वी कैन ड्रीम एनीबॉडी कल गोटे वीडियो देखली यूट्यूब रे गोटे झीर ता नाम मन पड़नी मोर तार वीडियो भाइराल होईची से गीत गाइबा ए जो काम करूची से प्रथम जो देखैतला केते 25 ना 35 टा व्यू होइतला वर्तमान तार 4 मिलियन सब्सक्राइबर से कहउतला मोटे भाई बार देखतु ता नाम मन पड़नी इट इज हैपनिंग इट इज बिकॉज इट इज इंडिया एटी सबु किछि तुम पे प्रशस्त अछि कारण विशाल देश तुम जहां भी आरंभ करिवो कोठी की पळेबो स्काई इज द लिमिट तो डिफेंस को सही पे रखाई सेंटर भारत अखंडता भारत यूनिटी इंटीग्रिटी बजाय रखिया पे मो कथरा बुझी पड़छु तो लॉजिक हैला एटा कि जेमती डिवीजन कराइछि गोटे लॉजिक दिहाइछि बड़ पुओ कोन नबो बड़ पुओ टिके सेम दिया जिवो किंतु बड़ पुओ एक्स्ट्रा जिंस देला केना घरर जो कौन घर जो मर्यादा
जो तार जो इम्पोर्टेंस टा बा तार जो बाहर जो रही तार स्टैंडिंग टा ताकू ए बड़ पुओ बजाय रखियो बोली बापा भाबिले तेन बड़ पुओ टी अधिका दे दैछंती ता माने नो कि आउ जो दी पुओ से नेग्लेक्ट करछन ताकू भी देइछंती तो सेटा गोटे इलॉजिकल जिंस नो कारण सामग्रिक कथाटा भी गोटे दरकार व्यक्तिगत कथा जेमती इम्पोर्टेंट कलेक्टिवनेस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कारण आम कलेक्टिवली यूनाइटेड रहिले व्यक्तिगत भाव में खुशी रहिबा ठीक अच्छे तो दैट इज व्हाई 7th schedule establishes harmony between the center and state in such a manner that it gives least chance for compete then protects federal credentials. Obviously, because there are two lists, specialist union list and state list that establishes India as a federal country. So federal credential गुरा कौन होची secure होची. So division है ये center कौन करिवो state कौन करिवो. Good evening Dev. Thank you. Next आसीबा हम प्लान है. Next आसीबा में prevents threats to unity and integrity. 7th schedule डिविजन क्लैरिटी है बोली यूनिटी और इंटीग्रिटी प्रति एते विपद ना जी जो समय जहाँ काम करिया कथा से करूछि इंटरनल थ्रेट एक्सटर्नल थ्रेट हेले सेंटर तार एक्शन नउछि सेति स्टेट मानकर हेडाक नुह तो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी बजाय रहउछि जदि सेंटर और स्टेट दी जन को रिस्पांसिबिलिटी हितांता तले हुए तो इंडिया रो सिक्योरिटी और थ्रेट्स निश्चित भाव में इंडिया रो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी मस्ट हैव बीन अंडर थ्रेट्स कारण बहु लोक कौन मूसा मरेनी गोटे कहावत अच्छी एमती गोटे एरिया रे निष्पत्ति निया सेंट्रलाइज डिसीजन दरकार कारण से इमिडिएट डिसीजन दरकार तेणु जदि ये सेंटर स्टेट उभय डिसीजन ने डू डिक्लेरेशन ऑफ वार डिक्लेरेशन ऑफ पीस वार एंड पीस एटा यूनियन लिस्ट रे रखाई कहीं कह कारण जदि यूनियन वार और पीस जदि कनकरेंट रे था कि स्टेट रे था ताले 28टा स्टेट जदि कनकरेंट रे था 28टा स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट बसिकी डिसाइड कला बेलू युद्ध भारत वर्ष को संपूर्ण भाव में ध्वंस कर सारी चिंता कर 1962 मसीहा कथा चिंता कर 1971 मसीहा कथा चिंता कर जदि वार एंड पीस डिफेंस फोर्सेस जदि सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर न था भारत आज भारत ही न था कारण आम 28टा लोक मिसिकी 28टा मुख्यमंत्री जड़े प्रधानमंत्री बसिकी कौन करवा कौन न करवा कहार सब व्यक्तिगत स्वार्थ थी सी कह ना युद्ध करवानी किए कह युद्ध करवा तो गोटे यूनिटी आनिबा गोटे कोहेजन आनिबा गोटे एकमत यूनानिमस डिसीजन नबा डिसेंट्रलाइज्ड वे रे इज वेरी डिफिकल्ट तेणु डिसेंट्रलाइजेशन इज नॉट बैड बट इट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन सर्टन सर्कमस्टांसेस तो ठीक अच्छे हार्मोनी तो सिक्योर स्टेट नेक्स्ट सिक्योर स्टेट ऑटोनॉमी भी प्रोटेक्ट करुच्ची कारण स्टेट लिस्ट ऊपर स्टेट रो बहुत सारा अधिकार रहउची तेनो सेटा स्टेट ऑटोनॉमी प्रोटेक्ट करुच्ची नेक्स्ट आसिया पिलाने सो नाउ विल कम टू द लिस्ट देयर आर 3 लिस्ट अंडर दैट ए जो डिवीजन ऑफ पावर्स तो स्ट्रिक्टली हमें ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इट वाज नोन एज फेडरल लिस्ट प्रोविंशियल लिस्ट एंड concurrent list but it is known as list 1 union list 2 state list in list 3 concurrent list now it is 98 subjects अच्छी वर्तमान after GST केते जगह देखुची मो 100 list 100 देखुची कोन तो सेटा हम देखि देबा but authentic source रो होची 98 subjects अच्छी एटी 59 subjects अच्छी एटा सब आफ्टर आइटम्स भी तक कहती 59 subjects एटा 52 subjects अच्छी वर्तमान रेटा रिसेंट डाटा बट मु केतेटा देखुतिली केतेटा साइट रे से माने 100 बोली कहउछन मुटी देखे काउंट्स करे पार्लियामेंट साइट रे गले गवर्नमेंट साइट को गले टी ऑथेंटिसिटी तो अपडेट करी नांती बट एटा एंती रख 98 यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट एला 59 सब्जेक्ट्स एटा 52 सब्जेक्ट्स बट ये चेंज जदि किछि हुए नेक्स्ट पुनी वीडियो कारण पिलाने ए जो लिस्ट कथा हम देखिबा हुए तो गोटे वीडियो रे न होई पारे हम सेकंड वीडियो भी ता परे परे नै अछि ठीक अछि सो दैट इज देयर सो देयर आर 3 लिस्ट हम देखले यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट एंड concurrent लिस्ट एटा तो तुम भलो बारे जानि थिबो
कि यूनियन लिस्ट उपरे यूनियन हैज एब्सोल्यूट अथॉरिटी टू मेक लेजिस्लेशन एतरे कोन यूनियन the union government gotte minute ro the union government has absolute authority over list 1. Union government has absolute authority माने कौन no other government can interfere in this matter. No other government माने state government माने union list ऊपर किसी करी परिबेन union list ऊपर state governments but state legislature do not have any authority at all. It is completely prerogative of the center, prerogative of the parliament to work on the union list. It is completely the domain of the center. State list the state government, the states have autonomy over the state list. The autonomy अछि तंकर से माने law करी परिबे and they can make their own law according to their own needs, own aspirations. But parliament can also legislate on state list. गोटे सेंटर स्टेट जो रिलेशन ऊपर मोटे वीडियो करथिली सेटा एते पिला को एते पिला ताको देखि ना कारण सेटा तो बहुत रेयर सब्जेक्ट जो मन सिविल प्रिपेयर होती से माने ही देखिबे बट सेतरे देखिबो सेंटर स्टेट रिलेशन ने मु कहिछि पार्लियामेंट पांचटी पाखापाखि पांचटी क्षेत्र रे स्टेट लिस्ट ऊपर लॉ करे कौन से गुरा ना under article 249 if Rajya Sabha passes a resolution in the interest of the state सेटा गोटे अछि राज्य सभा जदि राज्य तालिका उपरे गोटे रिजोल्यूशन आने स्टेट इंटरेस्ट रे ताले से करि परिबे ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी गोटे अछि एंड ड्यूरिंग प्रेसिडेंट्स रूल सेटा गोटे अछि एंड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी 253 अंडर रे अछि 252 होची नेशनल इमरजेंसी समय आ गोटे हला तुमरो इफ 2 or more state make a request बुझेला पांचटा क्षेत्र गोटे हला कोन इफ राज्य सभा passes a resolution द्वितीय हला ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी तृतीय हला ड्यूरिंग प्रेसिडेंट्स रूल स्टेट इमरजेंसी चतुर्थ हला for implementation of international treaties and agreements एवं पंचम हला if 2 or more states one state request कला हबनी 2 or more states make a request कि राज्य तालिका ऊपर गोटे लॉ करा जेंति फार्म लॉ कराइछ फार्म लॉ ता जो कराइतला जोटा अबोलिश हैला तेनु एग्रीकल्चर ता कोन स्टेट सब्जेक्ट किंतु सेटा पार्लियामेंट लॉ कला कोन स्टेट माने रिक्वेस्ट करथिले परे सीटा जेतु प्रोटेस्ट हैला ताको अबोलिश कर दिया गला बट करि परिबो सेमति बहुत सारा लॉ हिच तो पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट ऊपर लॉ करि परिबो किंतु स्टेट यूनियन लिस्ट ऊपर लॉ करि परिबो केबे भी नु बट पार्लियामेंट जो लॉ करिबो सेटा एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस जो पांचटा मु कहिले एवं आ गोटे कथा हला जदि पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट ऊपर लॉ करिथिबो एवं से समय सरिले फॉर एग्जांपल इमरजेंसी हैला प्रेसिडेंट रूल समय जो लॉ करा जाए सेटा सब दिन पे रहिबोनी सेटा 6 मास पे रहिबो इमरजेंसी सरिबार 6 मास पर्यंत बलवत्तर रहिबो and if the state legislature allows it to continue then it will continue otherwise it will come to an end बाकी अन्य गुरा कोन राज्यसभा पासेस रिजोल्यूशन सेटा स्टेट रिक्वेस्ट रे करा स्टेट रो इंटरेस्ट रे करा हबो एंड स्टेट मेक्स ए रिक्वेस्ट सेटा भी स्टेट माने रिक्वेस्ट करिवे बाकी इंटरनेशनल एग्रीमेंट तो देशर स्वार्थ पई करा जाय
तेणु धर जातिसंघ गोटे धर कन्वेन्शन करिछि कि कार्बन डाइऑक्साइड पई एतिकी प्लांटेशन कराबो कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन पई ताले सेटा सब राज्य को निर्देश दिए जीवा এবং सेंटर सेटा करिवो सेतरे राज्य माने किछ कहिबे कि कारण सेटा देशर स्वार्थ ना कार्बन डाइऑक्साइड हबो सेटा जातिसंघर गोटे निर्देश गोटे टाइप रो मैंडेट ता तेणु जातिसंघर मैंडेट जेटा आमर माने कहार लोक मानकर मैंडेट लोक माने किए स्टेट रो तेणु स्टेट सेतरे काई कोन कहिवो तो सेमती नाही जे सेंटर जबरदस्त सेटा करिवो तो सेटा तो इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री ना तेणु ए पांचटी क्षेत्र दिस इज ऑल अबाउट योर स्टेट लिस्ट and 59 subjects. With regards to concurrent list, both state, center and state can legislate. With regards to concurrent list, it will likhi douchi. With regards to concurrent list, both the union and states can legislate. Have the power, have the authority, have the power. Concurrent list रे दी जनकर पावर अछि but in case of conflict between the center and state over a concurrent law the central law will prevail over state law नरा जो concurrent रे गोटे forest गोटे subject अछि concurrent रे originally 47 subject थिला राज्य तालिकारु पांचटा सब्जेक्ट 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे ट्रांसफर हैला को सब्जेक्ट कह व्हिच सब्जेक्ट्स वर ट्रांसफर्ड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 टू फ्रॉम कंकरेंट फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कंकरेंट लिस्ट मनर गोटे हैला एजुकेशन गोटे हैला फॉरेस्ट गोटे हैला पॉपुलेशन एंड फैमिली प्लानिंग गोटे वेट एंड मेजर आउट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस बाजू ऑपरेशन मैनेजमेंट ऑफ कोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोर्ट्स सबऑर्डिनेट कोर्ट्स बुझेला गोटे एजुकेशन गोटे फॉरेस्ट गोटे पॉपुलेशन एंड फैमिली प्लानिंग आउटे कौन यस वेट एंड मेजर आउटे कौन कह लास्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस ये पांचटा सब्जेक्ट कंकरेंट स्टेट लिस्ट रु कंकरेंट लिस्ट को ट्रांसफर है से 52 हो तेणु कंकरेंट लिस्ट रे दी जन करें बट इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स द यूनियन विल प्रिवेल ओवर द स्टेट लिस्ट किंतु सुप्रीम कोर्ट गोटे डॉक्ट्राइन डेवलप करी डॉक्ट्राइन टा नाम लिखि दूस देखे doctrine of harmonious construction just look at these doctrines doctrine of harmonious constructions doctrine of harmonious construction mentions that in case of conflict between the center and states say over a concurrent list the central law would definitely prevail but the state law will not prevail will not be completely invalid so if से कहूची जदि डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन ने कुआ होची जदि गोटे स्टेट लॉ अरुण गुड इवनिंग थैंक यू फॉर विशिंग सो जदि से कहूची गोटे स्टेट लॉ जदि सेंट्रल लॉ को कॉन्फ्लिक्ट करूची सेटा संपूर्ण भाव में इनवैलिड हबनी सेही पोर्शन टा इनवैलिड हबो जो पोर्शन टा सेंट्रल लॉ सहित कोन कॉन्फ्लिक्ट करूची रेस्ट ऑफ द पोर्शन जदि वैलिड अछि तान से रहिबो तेणु ये सुप्रीम कोर्ट डॉक्ट्राइन टा बट ओबियस ओवरऑल इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ओवर द कंकरेंट लॉ द सेंट्रल लॉ विल प्रिवेल ओवर द स्टेट लॉ सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कंकरेंट नेक्स्ट आसीबा में योर टॉपिक्स एटा में जो आसीबा आउट हम रखी छी हाउ टू रिमेंबर
हाउ टू रिमेम्बर टा गोटे रखिली स्लाइड टा एटा यस हाउ टू रिमेम्बर एक प्रश्न पचारि को सार मते कही जे केमिति मने रखा कथा सार हमको लिस्ट ऊपर विभिन्न आइडिया दउछन्ति किंतु सेटा कहू नांती एटा कथा तो ए कथा तू कहू तो मु जानि जे कथा तू भाबुछु बट सेमती नाही मु केबे धोखाबाज करेनी जति ज्ञान अच्छी सीमित ज्ञान सूक्ष्म ज्ञान सेटा पिलानक सहित शेयर करे तो एटा जो कहू हाउ टू रिमेम्बर अच्छा धरी दिया जाऊ तू आउ मु आउ जने मझिरे रखिबा का गुटे रखिबा दी जण हम रहइबा तू हे जा सेंट्रल गवर्नमेंट मु हे जी स्टेट गवर्नमेंट आउ गोटे कनकरेंट को रखी देबा एटा धर यूनियन गवर्नमेंट एटा कनकरेंट एटा स्टेट धरी निया जो तू यूनियन गवर्नमेंट मु स्टेट गवर्नमेंट और कनकरेंट हम दी जन जा करबा गोटे सब्जेक्ट कहूची देखे यूनियन गवर्नमेंट हला गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री स्टेट गवर्नमेंट हला गवर्नमेंट ऑफ द रीजन जोटा देश पई दरकार नेशनल इंटरेस्ट जोटा देश पई नेशनल इंटरेस्ट माने कौन नेशनल इंटरेस्ट माने सेटा केवल सारा देश पई दरकार प्रोटेक्शन डिफेंस एगुरा सब सेटा किए करिवो सेंटर करिवो स्टेट कले कॉन्फ्लिक्ट हबो ना 28टा स्टेट 28टा लोक 28टा मन डॉक्टर्स डिफर नाना मुनि नाना मत तो नाना मुनि नाना मत रे तू केमिति गोटे गुरुत्वपूर्ण मैटर को 28 जन को छाड़ दो दैट इज ए पॉइंट टू बी नोटेड तो जदि मु धरा जो तते सब्जेक्ट कहूची जोटा कोटा धरा जो तू तो डिफेंस कथा तो जानिलु डिफेंस कथा तो जानुचु सेटा तते सेति पई छाड़ दे डिफेंस कथा तो जानुचु धरा मु तते गोटे सब्जेक्ट कहूची धर मु सब्जेक्ट कहूची गोटे हला एटॉमिक एनर्जी धर जो मु तते कहूची सब्जेक्ट गोटे सब्जेक्ट कहूची एटॉमिक एनर्जी गोटे सब्जेक्ट कहूची एटा कोथरे रहया दरकार मते कहिलु एटॉमिक एनर्जी भलिया गोटे बहुत प्रीशियस एनर्जी एटा जनक हाथ रे देले भलो आउ ना दी जनक हाथ रे देले भलो ना सानो भाई हाथ रे देले भलो सानो भाई की राज्य 28 जन रहिले 28 जन को देले भल ना जन को देले भल ना 28 प्लस 1 29 जन को दे देबा डेंजरस माने रिस्क कोटा बेसी सेफर कोटा निजे भाव यू कैन गेस द थिंग्स एटॉमिक एनर्जी कथा गोटे एग्जांपल दे ये गोटे प्रीशियस एनर्जी एटा जदी गोटे सेंट्रलाइज डिसीजन न रहे ताली निश्चित भाव में डिस्ट्रक्टिव हो से एटॉमिक एनर्जी टा यूनियन लिस्ट रे अछि हम तो देखिबी केतरा सब्जेक्ट मु खाली गोटे रिमेम्बर कहूँ जो रिमेम्बर होउछु सार गोटे एमती कहतु रिमेम्बर दियो आम रिमेम्बर करिबो रिमेम्बर कथा छाड़े एटा तो मेमोरी चिप्स ही नहीं हमर आम रिमेम्बर किंतु आम बुझी गले ना आम पूरा स्वर्ग मर्त्य पाताल एकाठी कर दउ मनुष्य गोटे एमती शक्ति जे जदि से थरे इच्छा करे ही कैन मूव द माउंटेन वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे एटा गोटे कथा देखिल धर मु देली एग्जांपल गोटे यूएन यूनाइटेड नेशन गोटे वर्ल्ड गवर्नमेंट नो एटा गोटे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन विश्व शांति विश्व रे मैत्री भाव यूनिवर्सल ब्रदरहुड पीस प्रॉस्पेरिटी पई जातिसंघ प्रतिष्ठा कराई एथिरे सबु देशर सम्मानजनक पदवी रही स्थान रही एटा कहा हाथ रहा कथा यूएन अफेयर्स टा यूएन विषय रे कौन निष्पत्ति निया जीवो 29 जन को दबु ना 28 जन को दबु ना जन को दबु 28 जन को देले देशर सम्मान हानि हो 28 जन 28 प्रकार कथा कहिबे
तते यूएन कही भारत को जे एति बेले डिसीजन भाई कन्वेंशन टा जल्दी साइन कर समस्ते साइन कर सारे तमें साइन कर आम इम्प्लीमेंट करूँ किंतु तू कहबू रटे आम 14 जन बा कहते 14 जन अच्छा पुणी मसे पर कहबू 14 जन रु 6 जन कहीदे आउ 8 जन रही पुणी 3 मास पर कहबू 8 जन रु 3 जन कहते आउ 5 जन रही पुणी 6 मास पर कहबू 6 जन रु 4 जन कहीदे 2 जन रही पुणी 6 मास पर कहबू जड़े भाई अद्भुजा अच्छी किसी कहूनी तमाने डिसीजन विल बी वेरी मच इम्पॉसिबल इन फैक्ट कहीं चिंता कर मेकर्स माने ते छोटिया लोक नथिले मेकर्स जो बसी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे से पवित्र गृह रे से जो 2 वर्ष 18 दिन जो 2 वर्ष 11 मास 18 दिन काल जो इंडिया रो सबुटारू डेवलप्ड ब्रेन गुरा काम करूला हेटा गोटे छोटिया ब्रेन नथिला कालजयी थिले से नेता सेतबेल समय से माने तुंग बा आगधाड़ी मनुष्य थिले विश्व तांको सम्मान दउतला छोटिया लोक नथिले अंबेडकर नेहरू पटेल इवन गांधी एमाने एते छोट ब्रेन वाला नथिले आज तुम्हें बाहाबार नौच आम एमती करदेलु सेमती करदेलु किंतु सेतबेलर भारत वर्ष जोटी ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन रो बॉटलनेक्स थिला डेवलपमेंट गोटे डिस्टेंट ड्रीम हेगी थिला जोगाजोग करिबा जो जोगाजोग करिबा बा ट्रांसपोर्ट जो हमर परिवहन व्यवस्था संपूर्ण भाव में बहुत अति निम्न धरण थिला तापरे भी देश सारा बुली लोक सचेतनता तैयारी करी लोकमत सृष्टि करी भारत भली गोटे विशाल देश को ब्रिटिश भली गोटे प्रभावशाली शक्ति विरुद्ध रे फाइट करी देश स्वाधीन करथिले से लोक माने जो संविधान उपस्थित थिले से मानकर माइंड रे सब जिनस थिला से माने सेति पई गुरा देथिले यूएन अफेयर्स एटा तो लॉजिकली भाबे यूएन अफेयर्स ता कोठी रही परिबो आ गोटे कथा देख फॉरेन अफेयर्स ता वैदेशिक संपर्क गोटे भारी सेंसिटिव जिनस एटा बाइलैटरल मल्टीलैटरल रिलेशंस ट्राइलैटरल रिलेशंस बहुत सेंसिटिव एस्पेक्ट कारण बाहर देश से माने छोट हंतु बड़ हंतु आदित्य थैंक यू वेरी मच यस वर्नाकुलर यूट्यूब गोटे कौन देलानी बढ़िया ना टिके लिखिले भल मत गोटे ना मन रखियो भल लगे ना टिके भल लगे और ठीक अच्छे बढ़िया कथा ठीक अच्छे तो जो फॉरेन अफेयर्स रहा बाइलैटरल मल्टीलैटरल संपर्क ट्राइलैटरल क्वाड्रिलैटरल संपर्क केते लैटरल आसीबो एटा सेंसिटिव एस्पेक्ट गोटे एते करिकि भी भारत सहित द्विपाक्षिक संपर्क एटलिस्ट तर नेबरिंग कंट्री सहित एते भल रहउनी इंडिया इज ए पीस लविंग कंट्री एंड इंडिया केबे माने तार फॉरेन पॉलिसी रे केबे एंटी जो नेबरिंग कांसेप्ट केबे रखिनी बट स्टिल द relationship between India and the neighboring countries is not as good as it is expected or it should be. तो ए भलिया गोटे संगीन बा ए भलिया गोटे सेंसिटिव मैटर रे काहाकू संपर्क देबू काहाकू दायित्व देबू 28 जन को देबू ना 29 जन को देबू ना जन को देबू ऑब्वियसली हमें जन को देबू कारण जने डिसीजन न जने डिसीजन नेले खराब नौ भल नौ किंतु नब 28 जन नेले बा 29 जन नेले किछि डिसीजन ही आसीबनी and the country will be ridiculed, will be a content of laughter at the world forums. कौन कहिबे लोक कि भारतर कथारे ठीक नहीं से माने निष्पत्ति नवा को डेरी करछन तू साधारण जीवन में देखे जो परिवार रो मतामत जानिया पे लोक इच्छा प्रकाश करंतिनी कारण तांकर किछि मतामत आसेनी नाना मुनि को नाना मत सेठी गोटे यूनिफाइड डिसीजन किछि नथाए से परिवार रो ऊपर लोक भरोसा करंतिनी एक्जेक्टली सेंति देश ऊपर भरोसा करिवेनी ट्राइलैटरल एंड बाइलैटरल इन द कॉन्स्टिट्यूशन मीन द्विपाक्षिक त्रिपाक्षिक बाइलैटरल दुईटा देश भितर संपर्क बाइलैटरल रिलेशंस ट्राइलैटरल तीनटा देश भितर संपर्क क्वाड्रिलैटरल चारिटा देश भितर संपर्क
कहूँ गोटे एग्जांपल दूसरी मल्टीलैटरल बहु देश भितर देश देश भितर संपर्क लैटरल मल्टीलैटरल बाइलैटरल यूनिलैटरल ट्राइलैटरल जहाँ कही पार तो फॉरेन अफेयर्स आसिला कि नहीं गोटे सेंट्रल अफेयर से जिनस गुड़ा आमको लॉजिकली देखा पड़ो कि कौन एक्चुअली अच्छी आ गए देखे सिटीजनशिप सिटीजनशिप देखे आमर जो निकट अतीत गोटे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास हो 2019 से कौन कराई कह ना बांग्लादेश पाकिस्तान आ अफगानिस्तान रु आसीथिबा नमस्कार किशोर थैंक यू फॉर कमिंग लेट बढ़िया बढ़िया किशोर डेली अटेंड कर मो सेशन को बढ़िया पिलाटे से तो बढ़िया तार परफॉर्मेंस बढ़िया होची ठीक अच्छे तो यहाँ आम कथा लिस्ट विचार सो सिटीजनशिप गोटे कथा देखे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 रे बांग्लादेश अफगानिस्तान और पाकिस्तान रु आसीथिबा शरणार्थी मानू सिटीजनशिप दिगला केवल मुस्लिम लोकों को एक्सक्लूड कर दिगला कारण से माने जो देश रु आसीथिले जो अफगानिस्तान पाकिस्तान और बांग्लादेश सेटा मुस्लिम डोमिनेंट कंट्री गुड़ा तेणु सेठी मुस्लिम लोक जाइकी रही पारिबे तेणु एमाने जो आसीथिले एमाने कहले आमे रिलीजियस प्रोसिक्यूशन होउछु अर्थात धर्म नारे आमे अत्याचार सहउछु तेणु आमे आउ सेठी जीवनी आमे भारत रे रही भारत तो गोटे सेक्युलर कंट्री वसुधैव कुटुंबकम सर्वधर्म संभवम समन्वयता एठी अच्छी तेणु एठी सबु धर्मर लोक निज घर बोली भावती तेणु आमे एठी रहिबु से भारत भी तांको वेलकम कला तेणु सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास करागला एवं सेटा इम्प्लीमेंट चली एबे तार रजिस्ट्रेशन चालूची तुमे जानिथिबो एबे पोर्टल तार इंट्रोड्यूस हेछि निकट अतीत रे तो सेटा कथा जदि सेटा जो से भलिया निष्पत्ति सिटीजनशिप रो निष्पत्ति जदि आज देखे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास होला परे बहुत राज्य रे विरोध हेछि भिन्न भिन्न राज्यर निज निज स्वार्थ नहीं कि से माने विरोध करछन्ति बहुत राज्य रे विरोध हेछि दंगा हेछि वायलेंस हेछि एवं बहुत सारा प्रोटेस्ट हेछि बट तापरे भी केंद्र सरकार सेटा को इम्प्लीमेंट करूछि कारण किछि लोकंक स्वार्थ को बा जो माने माइग्रेंट्स माने आछन्ति तांकर स्वार्थ को दृष्टि रखी केंद्र सरकार एटा को इम्प्लीमेंट करि सारले जदि ये जो मैटर भाई एमती सेंसिटिव मैटर भाया जिनस गुड़ा तू क्या दबू जन को दबू ना 29 जन को दबू ना 28 जन को दबू लॉजिक बुझुस तो मुझे लेमैन लैंग्वेज रे कहूँ मुझे किसी मेजिक्सियन नुह जे ते ट्रिक कहीदेवी तू मन रखिदेव आईएएस सेमती होते तो मुझे कहीं हो आडा 24/7 ओपीएस रे था मुझे निजे गोटे मोर जो चैम्बर खोलता माने कूक विद्या चैम्बर इट्स इम्पॉसिबल Is that correct? Clear or not? That is why जो माने रहिले जो लिस्ट गुरा से गुरा हला कोन से गुरा हला गोटे गोटे इंपोर्टेंट मैटर्स बाकी गुरा सब मु देखैबी तते कोन कोन रही छी आ गोटे हला तुमरो जो पैटेंट अदर सेंसस हला जनगणना सेटा भी रहिबो सेंट्रल बैंकिंग गोटे जिंस देखे बैंकिंग ता डाइवर्सिफाई 28 जन को देले कोन 28 प्रकार बैंकिंग सिस्टम हो इंश्योरेंस है 28 जन को देले कौन हम 28 टा इंश्योरेंस सिस्टम से यूनिफाइड कर दिए जोटा यूनिफाइड हेले कौन हम ना बैंकिंग रूल्स एंड रेगुलेशन ठीक रहा चारियाडे आरबीआई गोटे बैंक रहा सेंट्रल बैंक सी तार ऑपरेट कर भल मंद जहाँ भी हम ताकू आम कह प्रज्ञा ठीक अच्छे सो दैट इज एसेंशियल से अनुसार से जो टॉपिक टा तू देखिबू सेटा टिके बुझिबो सेमती मु कहि पारुनी जे सेमती बहुत टॉपिक अछि कि जोटा तू भाबी परिबुनी जे कोन हबो सेमती भी अछि मु मना करनी बट ओवरऑल गोटे कमांड पड़े आसी जे एटा जातीय स्तर रे दरकार यूनिफाइड डिसीजन दरकार सेंट्रलाइज्ड डिसीजन दरकार द सब्जेक्ट्स व्हिच आर ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस द सब्जेक्ट्स व्हिच रिक्वायर ए सेंट्रलाइज्ड डिसीजन आर मेंशन्ड इन द यूनियन लिस्ट एबे गोटे स्टेट लिस्ट कथा भावे स्टेट लिस्ट को जदि हम आसीबा धरा जाऊ गोटे देखे हमर एग्रीकल्चर गोटे देखे एग्रीकल्चर और हेल्थ दीटा देखे एटा एग्रीकल्चर देखे इंडिया रे एग्रो क्लाइमेटिक जोन गुरा सबवाडे समान नो सॉइल सेम नो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर फाउंड इन इंडिया alluvial laterite red केते केते सॉइल अछि रे उपा
जियोग्राफी पढ़ुथिबु तो मुंड खराब हो जाउ पुणी एग्रो क्लाइमेटिक जोन मु तो देखतली ओडिसा रे 10टा एग्रो क्लाइमेटिक एग्रो एग्रीकल्चरल डिवीजन है डिफरेंट सॉइल अछि डिफरेंट प्रोसीजर रे कल्टीवेशन होछि इवन निज राज्य रे भी भिन्न भिन्न प्रकार चाष होछि तू बड़ सबुआडे जदि ओडिसा रे जीवु तू भाबिबु जे एते प्रकार गोटे विविधता बहु विविधता अछि इंडिया रे जति नै ओडिसा रे जति तो वैरायटी अछि तेणु जेतु अपना अपना मैटर है सेटा राज्य मन को दिया जीव एग्रीकल्चर डिफरेंट अछि सब राज्यर क्लाइमेट अच्छी वेदर कंडीशन अच्छी सॉइल अच्छी फ्लोरा फॉरेस्ट कंडीशन अच्छी तेणु से अनुसार एग्रीकल्चर ग्रो करिवो लोकंकर एग्रीकल्चर आ गोटे कौन लोकंकर जो इनिशिएटिव बा जो वर्किंग नेचर से एग्रीकल्चर पंजाब हरियाणा माने एग्रीकल्चरली डेवलप करना से हार्ड वर्किंग पीपल एंड दे हैव डेवलप्ड तेणु से करिसेंती तेणु से एग्रीकल्चर टा 28 जनकर 28 प्रकार दे दियो जे जी पारिबो से करिवो जे न पारिबो से करिवोनी जे पारिबो जे करि पारिबो से बड़ हबो जे न करि पारिबो से पुअर हबो ओडिसा रे एग्रीकल्चर एबे भी सबसिस्टेंस लेवल रे अछि कमर्शियल एग्रीकल्चर ओडिसा रे प्रमोट हेनी कारण तू मते बतेइबू कारण तुमे माने कहिबो कोन पे हेनी मु से गुरा एठी आलोचना करिवि पंजाब रे एग्रीकल्चर डेवलप्ड होइछि हरियाणा रे डेवलप्ड हेलानी वेस्टर्न यूपी रे डेवलप्ड होइछि साउदर्न इंडिया रे भी बहुत पार्ट रे आंध्र इज वन ऑफ द एग्जांपल आवर नेबरिंग स्टेट बट ओडिसा रे काहे की कृषि मॉडर्नाइजेशन हे पारुनी काहे की कृषि इज स्टिल एट द सबसिस्टेंस लेवल व्हाई कमर्शियल एग्रीकल्चर इज नॉट बीइंग वाइडली प्रमोटेड इन ओडिसा That is a big question which requires your answer. तेणु से एग्रीकल्चर को अलग अलग दि से कंबाइन एफर्ट दरकार नहीं से इंडिविजुअल एफर्ट दरकार जे करिवो से बढ़िवो गुड इवनिंग तपन गुड इवनिंग तपन अच्छा ठीक अच्छे तापरे हेल्थ देखे हेल्थ रो डिफरेंट पैरामीटर अच्छे हेल्थ रो अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट अकॉर्डिंग टू कंडीशन हैबिटेशन डिफरेंट होची हेल्थ तेणु जेहेतु एटा लोकलाइज्ड फॉर्म गुरा रीजनल इंपोर्टेंस अछि नॉर्थ ईस्टर्न साइड रे रोगर कारण अलगा कोस्टल साइड रे रोग भिन्न भिन्न प्रकार रोग गुड इवनिंग सागर थैंक यू फॉर कमिंग जॉइनिंग तो ठीक अच्छे तो नॉर्थ ईस्टर्न साइड रे अलग रोगर कारण थाए अलग अलग रोग थाए कारण थाए कोस्टल ओडिसा रे अलग हिली पैटर्न रे अलग सब तेणु डिफरेंट वेराइटी अच्छी एवं एक्सेस टू हेल्थ भी सेटा रीजनल देखिया पड़ो कि केते दे परियो सेते हेल्थ टा स्टेट लिस्ट लखाई पुलिस सेमती गोटे पुलिस गोटे तार जेतु पुलिस टा राज्यर निजर पुलिस राज्य निजे तार दब जी जो राज्य निजे यस लो इरिगेशन लो सॉइल लो फेड सॉइल नेचुरल डिजास्टर इज नॉट ए कॉज नेचुरल डिजास्टर कौन पंजाब रे होन ना हरियाणा रे होन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अच्छी बहुत सारा होची एठी गोटे जिनस होची देख ओडिसा रे कृषि डेवलप नबार गोटे होची वी आर नॉट कमिटेड टू एग्रीकल्चर आमे एग्रीकल्चर को मेनली तो प्रमोट करूने माने मु तो भाबुची कि एजुकेशन सिलेबस रे एग्रीकल्चर गोटे सब्जेक्ट रखिया कथा एवं आमर जो ट्रेडिशन परंपराटा भी मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर नु आमे भी स्टिल से ट्रेडिशनल टूल्स रे यूज करूछु एंड आउट एक कथा होची कोन कहलु स्मॉल लैंड होल्डिंग जोटा अच्छी सेटा गोटे मेजर जिनस आमर कंसोलिडेशन टा जो चलथिला सेया करिया कथा तेणु आमर जो जमीर होल्डिंग कैपेसिटी टा बहुत कम आमर बड़ बड़ चासी एते नाहंती सेटा गोटे जिनस तापरे न्यूक्लियर फैमिली हला जो आगुरु कोन जॉइंट फैमिली सिस्टम थिला तेणु सेगुरा सब ये लो इरिगेशन टा तो गोटे कारण इरिगेशन गवर्नमेंट करिया कथा बट फिर भी जो ड्राई फार्मिंग अच्छी प्रमोट करिया कथा हिली रीजन रे इरिगेशन हबो कि तो सेठी तुमे सेठी ड्राई फार्मिंग तेणु इक्विपमेंट दरकार इन्वेस्टमेंट दरकार एजुकेशन दरकार एवं बेसिकली आमर जो यूथ तैयारी होउचंदी से माने एग्रीकल्चर टू दूरे रहउचंदी कारण एग्रीकल्चर हैज नॉट बीन ए टॉपिक इन एजुकेशनल सिस्टम इन करिकुलम जहाँ पर आमे बंचुचे से ता ऊपर शिक्षा विषय किसी पढ़ा होनी ठीक कि भूल कह ठीक अच्छे तेणु से जदि पिला बेलू गोटे पिला शिखिला
कि एग्रीकल्चर कौन ताको प्रैक्टिकल करागला स्कूल लेवल रे एवं से जानिला ताले एग्रीकल्चर गोटे कौन ऑनरेबल पोजीशन दिए जीवो किंतु आमे एठी भाबुचे कौन जदि माने जदि जने धर पचारिबु जन को जे तू कोन करछु ना मु चाष करूची ताले तते लागिवो कि से बहुत इन्फीरियर हाँ काम दाम करुच्ची चाष काम करुच्ची बिल काम करुच्ची ठीक कि नहीं तो से जो टेंडेंसीटा पंजाब रे जदि जने कहला मु चाष करुच्ची ताकु से अनेबे देखिबे अनेक देखिबे कि अरे से बहुत बढ़िया होइतिबो बहुत बड़ लोक होइतिबो तो चिंता कर जो माइंडसेटटा एटा काहे कि होउची कारण हमर जो पिला बेलू आमे कृषि माने कृषि मुखी हेलुनी ता अभिमुखे रे गलुनी आमे ताडू दूरे दूरे गलु हमको कहला पाठ पढ़े बाबू हो ऑफिसर हो किंतु एग्रीकल्चर भी गोटे प्रायोरिटी एरिया कारण धर तू सिविल सर्वेंट होउछ ताल तोर अंडर भी एग्रीकल्चर आसीबे तू गोटे बीडीओ हेछि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर तो एग्रीकल्चर प्रमोशन भी तोर गोटे दायित्व ना किंतु सेटा ग्रासरूट लेवल प्रमोट करिया कथा मो कथा रे मेजर अला इंक्लूजन ऑफ एग्रीकल्चर एज ए सब्जेक्ट फ्रॉम द एटलीस्ट फ्रॉम मिडिल स्कूल लेवल षष्ठ सप्तम रु एग्रीकल्चर ऊपर रहू पूरा तापरे तुमरो माने एग्रीकल्चर पई विभिन्न प्रकार फाइनेंसिंग स्ट्रांग करा जाऊ एवं कंसोलिडेशन करा जाऊ लैंड होल्डिंग कंसोलिडेशन करा जाऊ गोटे गोटे एरिया रो जो 10 जन 15 जन को जमी रहला कार माणे कार दिमाणे कार 10 गुंटू एगुरा को मिसई दिया जाऊ एवं गोटे कंसोलिडेशन करिकी सरकार सेतरे इन्वेस्ट करू लोक आपे आपे जीवे कारण लोक एग्रीकल्चर कहीं जाऊना प्रॉफिट होनी लैंड यूटिलाइजेशन प्रॉपर्ली होनी इन्वेस्टमेंट पे पैसा नहीं लैंड अपग्रेडेशन होनी सॉइल टेस्टिंग होनी तापरे सरकारी प्रोत्साहन भी कम रहूची तेणु खाली कृषकों को पैसा देदेले 5000 3000 देदेले कौन हम तो सहीटा ग्रासरूट पूरा बटम रु टॉप को ये करिया कथा सो दीज आर द रीजन्स हमें सब्जेक्ट डाइवर्ट हो गले सो दैट इज व्हाई हेल्थ एग्रीकल्चर पुलिस एगुरा सब रही कौन रीजनल लेवल बा स्टेट लिस्ट रे रही तापर गोटे कथा देखे हमर अछि बुरियल ग्राउंड्स आउट है क्रिमेटोरियम क्रिमेशन ये जो मशानी है जो यहाँ कौन स्टेट लिस्ट आसो बुरियल ग्राउंड एगुरा सब क्या स्टेट डिफरेंट अच्छी डिफरेंट स्टेट डिफरेंट प्रोसीजर रे शवदाह करा जाए कौ धर्म रे कौन अच्छी कौ राज्य रे कौन अच्छी सी कथा बुझे केमती कौन करेंगे तो सहीटा सेंटर को कहीं दिए मो कथा तेणु सब्जेक्ट्स ऑफ रीजनल इंपोर्टेंस व्हिच रिक्वायर रीजनल अटेंशन regional planning regional approach that are included in the state list आराम से जानी मु तो देखुली मु तुम्हें कहला पर मु आउ थे गली लिस्ट को टे विजिट कली देखिनी एटा आराम से मन रही किसी ना को एरिया कहून को गोटे सब्जेक्ट को डाउट होउची जे सर एटा मते डाउट होउची एटा कोथरे रहबे कहले मते देखोन तू निजे जाई देख अच्छा जो गुडा रेयर अछि धर गैस एंड गैस वर्क गुरा मु देखै र गैस एंड गैस वर्क एगुरा कौन है स्टेट लिस्ट अच्छे एगुरा खाली मन रखियो आ कौन जोरा धर जोरा गैस करियो धर मु एटा देखली गैस करि पारुनी कि गैस एंड गैस वर्क टा सेंटर रहइबो कारण गैस भलिया वर्क किंतु एटा होची स्टेट को दिया ऑक्सीजन गैस तैयारी करिबे एगुरा जेंति कोरोना समय रे ऑक्सीजन टैक्स तैयारी तला सेगुरा सब ठीक है लागि नै तो एगुरा सब कौन एगुरा सब टिके साइड हे जे मु सेतबे लिस्ट कर देई छी कोडे तुम्हें मन रखिबो मु देखै देबी तुमको हला तो दैट इज वन नेक्स्ट आसीबा जोटा हमें जो 29 जन जाक मिसी करिबा ये 28 जन जाक अलग अलग करिबे कंप्लीट किछि नै जदि 28 जन भितर 5 जन चाहिए कि आमर आम पई गोटे नुआ नियम करिबा एग्रीकल्चर गोटे मिसी की नियम करिबा ताले केंद्र को कहिबे पार्लियामेंट करि परिबो अंडर आर्टिकल 249 जोटा कथा होछ म कथा रे बुझि परछ तेनु एग्रीकल्चर डिपेंड्स अपॉन क्लाइमेट वेदर कंडीशन सॉइल अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस एंड योर वर्क फोर्स एरा सब ऊपर निर्भर करूछ तेनु जे खटी पाला जे कंट्रीब्यूट करि पाला एटा लेबर इंटेंसिव टा एग्रीकल्चर टा लेबर इंटेंसिव अमेरिका भले एते कैपिटल इंटेंसिव हेनी हमर तो लेबर इंटेंसिव जाले भी रहइबो एग्रीकल्चर तेणु से अनुसार लेबर भी से अनुसार मिलवा लोकंर एटीट्यूड भी चेंज होगा दरकार ना बुझेगा कि नहीं तो दैट इज देयर नेक्स्ट धर आम देखा धर कनकरेंट लिस्ट देखे
concurrent list है कौन इटा 29 जन को कथा 28 प्लस 1 एटा समस्त करिवे गोटे धर है एजुकेशन एटा स्टेट रे थिला एजुकेशन 2 जन कले कौन हम कंट्रीब्यूशन आसीबो आगुरु स्टेट लिस्ट रे थिला स्टेट लिस्ट रे कौन होला धर तू कहबू खाली धर राज्य मानकर एजुकेशन टा राज्य मानक दिया जीवो कि कहबो मु गुरुकुल पाठ पढ़ेबी से जो पुराना पाठ सब पढ़ेबी मॉडर्न एजुकेशन पढ़ेबी कि कहबो मु फॉरेन एजुकेशन खाली देबी कि कहबो मु इंग्लिश इंप्लीमेंट करिबिनी सेटा सिना सी राज्य रे कर देबो पिलाटा देश भीतर चाकरी केंति करिवो तन सेति पई एजुकेशन टा कॉमन अप्रोच निया जाय सेंटर और स्टेट उभय रहिले कोन हो एजुकेशन फ्लोरिश करिवो तेणु न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 टा सेंटर करिछि स्टेट मान को सेटा ताको दिया जाइछि से माने एक्सपेरिमेंट करिक देखिबे इंप्लीमेंट करिवे चेंज करिवे तांकर अकॉर्डिंग टू देयर पैटर्न करिवे चेंज सेति पे एटा रखाइछि फॉरेस्ट उडे देखे फॉरेस्ट जदी राज्य को दिया जाए तारे सब काटी खाइ जिवे राज्य अछन जमनकर पैसा पत्र दरकार हो से काटी खाइ जिवे डिफोरेस्टेशन करते ता द्वारा कौन हम सी सीना डिफोरेस्टेशन करेंगे जातीय इकोलोजी नेशनल इकोलोजी कौन हम डिस्टर्ब हो ओडिशा रु धर जाऊ ओडिशा रु सब फॉरेस्ट काटिक आम बिकी खाई खाली ओडिशा रे क्षति हेबनी सारा भारत वर्ष क्षति हम कारण वी आर इंटर रिलेटेड इकोलोजी डिपेंड्स अपॉन द फॉरेस्ट एक्सपेंसिव अच्छी चारियाडे भारत वर्ष ईस्टर्न घाट टू वेस्टर्न घाट से लगी गोटे रेंज गुरा तो गोटे फावा काटबू जमी गोड़टा गोटे शरीर गोटे गोड़ काटिदे सारा बॉडी कौन हुए आक्रांत हुए अफेक्टेड हुए सेमती फॉरेस्ट भी गोटे टाइप कौन गोटे टाइप कोहरेन्स अच्छी तार इकोलोजिकल बैलेंस पे कंट्रीब्यूट करती तेणु फॉरेस्ट क्या दबा कथा स्टेट को दबा कथा प्लस सेंटर भी देखो से कनकरेंट रखा पॉपुलेशन प्लानिंग गोटे कथा देखे पॉपुलेशन और फैमिली प्लानिंग एंड एपी एटा जदि पॉपुलेशन जर स्टेट नब को स्टेट कहबो मु फैमिली प्लानिंग कंट्रोल करिबिनी सी सिना करिबोनी किंतु जो जनसंख्या बढ़िबो देशर जनसंख्या रे आडे बेसी सेति कंट्रोल रहिबा दरकार सेंटर कंट्रोल करिवो किछिटा पॉलिसी करिवो पॉपुलेशन पॉलिसी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 मसीह बहुत सारा तो यहाँ कले कौन हम समस्त गोटे कौन मिल समस्त गोटे गाइडलाइन मिल सबू राज्य गाइड देखिक काम करेंगे कथाटा बुझ मैरिज एंड डिवोर्स एटा 2 जन कथा कारण मैरिज और डिवोर्स फैमिली सिस्टम को अफेक्ट करुच लोकलाइज्ड डेटा रीजनल इंपोर्टेंस किंतु एदरे नेशनल इंटरफेरेंस भी दरकार हिंदू मैरिज एक्ट तैयारी कराई कारण हिंदू सबुआडे अच्छी मुस्लिम मैरिज एक्ट कराहब ट्रिपल तलाक एक्ट कराई सक्सेशन एक्ट कराई तो सेंटर न रही किए कर तेणु गोटे मैरेज टा समस्त इंडिविजुअल रिजनल सेमित देखिए गले मैरेज टा स्टेट भीतर भी अलग अलग स्टेट भीतर अलग अलग नुह कौ पटे धर ब्रह्मपुर पटे अलग गोटे मैरेज सिस्टम मैरेज पद्धति कराऊँगी धर गंजाम जो आम बालेश्वर साइड अधिक अलग कराऊँगी धर जो एपटे एपटे अलग करा पुरी साइड अलग कराऊ टे जहाँ वेरिएशन अच्छी मैरेज तो बुलूथु देखियो किंतु सेटा मैरिज तो द सब्जेक्ट्स व्हिच आर ऑफ कॉमन इंपोर्टेंस एंड रिक्वायर्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ both center and states are found mentioned in the concurrent list. ठीक है पिलाने so that is why the concurrent list is much more important but is both common for both center and states. बहुत सारा फैक्टर्स अच्छी जेतु हम पाखरे माने बहुत सारा में डिस्कशन कले एगुरा टी भल से देखिबो बाकी देखे बहुत सारा मु लिस्ट नहीं सेमती कनकरेंट अच्छी आउ मैं एटा मु तो इम्पोर्टेंस देली नेक्स्ट काली ए सेशन ठीक 5टा बेले जो हमर अच्छी कौन बुधवार अच्छी थर्सडे रे
मोर सेशन 2 टा आनिबी एवं सेतिरे आमे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट गुरा जो अच्छी सेंटर एंड स्टेट रो बा यूनियन लिस्ट कौन लिस्ट देखिबा आउरी किछि टिप्स नबा केमती आमे लिस्ट को मन रखिबा प्लाने तो एटा जेतु माने टाइम ही गलानी तेणु मत तुमटू विदाय नब पड़ो बाकी मन रख ये आर पार्ट 2 टा आम थर्सडे पुणी आरंभ करवा थर्सडे टाक लॉन्च करवा मु रेकर्डिंग करके दे देथिबी तुम देखिबो ताको संध्या 5 एटा लॉन्च हम तो यहाँ तुम्हें देखियो बुझेला कि नहीं फॉर ओपीएससी यस ओपीएससी कौन पे सर व्हाट बुक्स शुड बी रेफर्ड फॉर पॉलिटी प्रज्ञा एनी बुक बीएल फाड़िया बुक नहीं जा बीएल फाड़िया बही अच्छी इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स है डीडी बसु नहीं जा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डीडी बसु यहाँ धर डीडी बसु लिखी दूस देखे डीडी बसु इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ एबे भी दरकार यहाँ जदियो आउ एडिशन आसुनी किंतु यहाँ पढ़िया दरकार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गोटे अच्छी बीएल फाड़िया ने बीएल फाड़िया एंड अदर्स इटा ने इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इटा ने तापरे जो एमवी पाइली एमवी पाइली रो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेबी पाइल रो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बही नहीं पारू ठीक अच्छे बहुत सारा बही अच्छी गवर्नेंस लक्ष्मीकांत ठीक हम ना अलग सब सोर्स रू आने लक्ष्मीकांत एगुरा ठीक हम बाकी लक्ष्मीकांत तो कॉमन बहीटा से नोट्स रहा बुझीपार नोट्स रहा बट ओवरऑल गोटे थियोरेटिकल बही पढ़िया कथा हमर ओवरऑल थियोरेटिकल बही गोटे पढ़िया कथा हमर एटा रहिले रहिबो ठीक अछि सेटा रहिबा दरकार ओवरऑल गोटे थॉटफुल माने गोटे बड़ नोटेड लक्ष्मीकांत रखिले चलिबो किछ प्रॉब्लम नाही सेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम पई ही तयारी कराई छै तेन सेटा कथा कोनी तू मते बही कथा पचारलो तो लक्ष्मीकांत नोट्स भाया से तुमको हेल्प कर टोटाल सिलेबस कवर है सेटा रखिले भल किंतु एगुड़ा टी पढ़िया कथा कॉन्सेप्चुअल क्लारिटी एगुड़ा एक्सप्लेन बढ़िया कराई बीएल फाड़ियाला डीडी बसला अवस्थी माहेश्वरी अच्छी गोटे तो सेगुड़ा टी पढ़िले आमर जो अंडरस्टैंडिंग बेसटा बढ़िबो पिलाने सिविल सर्विस होची अंडरस्टैंडिंग पाठ सेटा हम न बुझिले किछि करि परिबानी वी कैन नॉट मेमोराइज ऑल दिस थिंग्स एंड पुट इट डाउन इट्स नॉट पॉसिबल That's why I'm telling you to go through some authentic books, different books. टिके भी पढ़ ये चैप्टर धर एट्रे भल लगे पढ़ल से चैप्टर से भल लगे पढ़ल से चैप्टर से भल लगे पढ़ल केते पैसा पड़ो 500,000 भितर बही एमि तो आडा ओपीएससी रे कम पैसा तू कोचिंग नहीं जीवु आ बही किन देबू बुझे लगे नहीं तो दैट इज पॉसिबल बिकॉज यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली ठीक अच्छे नेक्स्ट क्लास रे मु कथा भी तुम सहित पार्ट 2 रे बाकी जहाँ जहाँ सब डाउट आंटी मत पचार एवं जॉइन कर मत गुरुवार दिन 12टा समय कि 5टा समय शेड्यूल दि जाव आडा ओपीएससी को तुम्हें डाउनलोड कर दीता से सब इनफॉरमेशन तुमको मिल जाव से अनुसार तुम्हें मत जॉइन कर तो आम एटा बहुत सारा सब्जेक्ट थिला मु देखेबी एगुरा सब तुमको बाकी तुमको पिलाने कही कि जो अच्छी हमर जो बैच गुरा सब वारियर बैच एडमिशन गोइंग ऑन वारियर बैच रे तुम्हें प्रिलिम मेंस और इंटरव्यू रे सब झलक सब प्रिपरेशन पाइबो पीडीएफ पाइबो प्लस तार क्लास नोट्स गुरा दिया जिवो क्वेश्चन दिया जाउची से मोर क्लास भी पढ़लानी आउट जो मेन्स पर प्रिलिमिनरी पर जो मेन्स पे आरंभ होची गोटे जीएस पेपर क्लास आ गोटे तुमर एसए पई गोटे स्पेशल क्लास आ गोटे जनरल इंग्लिश पई क्लास और जनरल ओडिया पई भी क्लास से तुम्हें जॉइन करने पे प्रस्तुत रुह अफोर्डेबल प्राइस रे रहइबो सो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग विथ मी फॉर ए लॉन्ग टाइम।